Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying the paper solution of ISC BST exam business studies that was held on 11th of March 2026. Okay, so this is the section A that we'll be studying first, the solution of it. तो सबसे पहले कहते हैं that some employees at Dawn Limited overheard their managers discussing an artificial intelligence enabled program project. The news spread quickly, leading to speculations about possible layoffs. So यहाँ पर news spread एक keyword है, then overheard एक keyword है. तो what type of communication is indicated in the above case? So it will be considered as informal, or you can mention is it as grapevine communication. You just have to mention the name of the communication. Then name the outsourcing process in which an organization assigns its non-core processes to an external agency. So yes, it is business process outsourcing or BPO. अगर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ होती then it would have been KPO. Then next is observe the relation between the first two phrases and terms and complete the analogy. That is, the first one is systematic study of a job, that is job analysis. Explanation of the scope of a job is known as job description. When it comes to qualification, then it will be job specification. Training to rectify mistakes is remedial training. Training to update a new technology will be known as a refresher training. ठीक. Next is refresher training or skills development training. Then according to Herzberg, the presence of dash factors is necessary to avoid dissatisfaction among the employees. So it will be mentioned as hygiene factors. Then a dash report is intended to use of a few authorized individuals only. It will be private report. Then dash leadership enables leaders to adapt themselves to varying scenarios and tasks at their workplace. It will be situational leadership. ठीक है, बहुत अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बट हाँ कीवर्ड्स यू आर सपोज टू रिमेंबर. In business communication, the use of video conferencing. Okay. Assist superiors and team leaders situated in diverse locations to have a real-time conversation and take work-related decisions. Then Varsha wants to attend the naming ceremony of her friend's baby, which requires only a day's leave. Since her friend has been unwell and requires support, Varsha decides to apply for an additional day's leave. Considering the purpose and duration of leave, select the type of leave that should be applied for. So is it earned leave? No. Medical leave? No. Casual leave? No. It is maternity leave? No. It is casual leave. Okay. Then next is in the human resource department at Harry and Sons wants to reduce subjective biasness while evaluating the performance of each worker and comparing the results. Which of the following would be the most suitable to appraise a worker at Harry and Sons? अब this is a kind of काउंसिल आपका कोई और आंसर देगा, आपके हिसाब से कोई और आंसर होगा, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग लेते हैं. वर्कर्स रिलेटेड टू फिक्स्ड परफॉर्मेंस कैटेगरीज सच एज एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री एंड पुअर. अगेन व्हेन यू गो टू सच कंडीशन, सो हूसोएवर इज गिविंग यू रेटिंग्स, उसकी पर्सनल बायसेस इसमें आएंगी. ठीक. दैट वॉन्ट्स टू रिड्यूस सब्जेक्टिव बायसनेस. दिस इज द आंसर दैट आई, मतलब मैं अपनी साइड से, हो सकता है कि गलत हो. Then feedback on performance collected from self, superior, subordinates and peer, that is 360 degree appraisal. अब यहाँ पर जब आप सेल्फ को अप्रेज करोगे तो ऑब्वियसली आप खुद से सबसे ज़्यादा मार्क्स दोगे, तो इट विल अगेन बी सब्जेक्टिव. वर्कर्स परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड बाय देयर इमीडिएट सुपीरियर्स. हो सकता है मेरा इमीडिएट सुपीरियर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मतलब ही फेवर्स मी, ही और शी फेवर्स मी अ लॉट, तो वहाँ पर भी पर्सनल बायसनेस आ जाएगी. अप्रेजल on performance based on the achievement of targets. You have given me the 10% target or 50% target sales target, and I have achieved that, means you will give me the appraisal, fixed amount of appraisal on the basis of what I have done. ठीक.
तो अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट सूटेबल वन would be this, because evaluating the performance of each and every worker and comparing the results on that basis, it will be appraisal of performance based on results, that is appraisal by results. ठीक है, जो आपके मेथड्स ऑफ अप्रेजल था उसमें. तो अकॉर्डिंग टू मी ए विल बी द करेक्ट आंसर. Then, and yes, I leave this question open for debate. Next is identify the correct statements about crowdfunding. Funds are raised from high net worth individuals. No. Small contributions are raised from a large group of individuals. Yes. Funds are secured through stock market. Yes. Equity crowdfunding is there. And funds are sourced from RBI. No, RBI is not a source of funds. Then, so it will be Q and R. Next is the process of recruitment concludes with the correct placement of applicants. No, क्योंकि the process of selection concludes with that. Recruitment is concerned only with the shortlisting candidates. No, recruitment is concerned with identifying the different sources, and selection is considered with the shortlisting, and it starts with the shortlisting of the candidates. तो दोनों ही जो रीजन्स हैं वो असर्शन रीजनिंग दोनों ही फॉल्स है. सो फर्स्ट D1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन अ कोटेशन लेटर सीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद द सेलर. नो, एन इंक्वायरी लेटर, तो इट विल बी फॉल्स. whosoever the question paper is, so ये सही लिखा हुआ है. Then FSSAI collects the data on contamination of water. No, regarding the edibles, food and all. Laid off employees cannot be reappointed in the same firm when its business condition improves. False, they can be. Then trade blocks such as increase in tariffs restrict globalization. That is true. ठीक, तो false, false, false and true. देन इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट लाइक क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला वाला कहता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये मॉरल स्टिमुलेंट और डेप्रेसेंट कैसे है. सबसे पहला मैनेजमेंट पॉलिसीज, क्लियर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ है. इंक्रीमेंट प्रमोशन रिलेटेड, इट विल बी अ मोरल स्टिमुलेंट. एंड अगर वेग पॉलिसीज़ हैं, एब्सर्ड है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, तो फिर इट विल बी डेप्रेसेंट. देन नेक्स्ट इज ये वाला वर्किंग कंडीशंस वाला, क्लीन सेफ एंड वेल इक्विप्ड वर्क स्पेस है, तो इट विल बी अ मोरल स्टिमुलेंट. एंड अगर नॉइजी लैक एनवायरनमेंट है, लैक ऑफ सेफ्टी गियर्स इज देयर, ओवर क्राउडेड है, देन इट विल बी डेप्रेसेंट. देन नेक्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर्स, द लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं वो सिमेंटिक होते हैं. अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस भी इसी में ही आते हैं. ठीक, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स आपके जो टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, नॉइज़ है उन सब से रिलेटेड, दैट इज़ फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स. नेक्स्ट इज मार्वल लिमिटेड प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड नीड्स हेल्प in generating capital by ensuring compliance with the securities market regulator. You have to identify the securities market regulator. This is SEBI. Next question is you have to state any one way in which the securities market protect the investors. So it will be protection against that prohibition of fraudulent and unfair trade practices. So यहाँ पर हम unfair trade practice लिख दे रहे हैं. ठीक, the protection from it. Next is which intermediary of securities market regulator should Marvel approach to generate capital. So it will be known as merchant banker. An initial public offer can be given, and they should approach the merchant banker, that is the lead manager. Then can the securities market regulator permit a commercial bank to give funds? No, RBI regulates commercial banks, and securities market stock exchange regulates the, means SEBI regulate these capital market. So it will be no. Reason behind कि a commercial bank is regulated by RBI, not this SEBI. Next is horizontal and vertical का आपको वो बताना था.
तो सबसे पहला इस पर्पस, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है हॉरिजॉन्टल की, दैट इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड वर्टिकल का इट इज़ कंट्रोल. ठीक. देन डायरेक्शन, इट इज़ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ वर्टिकल, मतलब इट फ्लोज इन अ लेटरल फ्लो and it flows from upward to downward the hierarchy. Relationship, people are of equal status or these are the peers, and यहाँ पर जो relationship है वो superior और subordinate का है. Then speed, it is fast and because same department से, and it is slow because एक hierarchy follow हो रही है. Then next is question number 5, that two friends Anandita and Ruxana started a business based on the verbal understanding. Anandita invested 20 lakh, Ruxana invested 30 lakh in the business. They agreed to share the financial outcomes of the business equally despite contributing unequal amount of capital. So you have to identify the form of business, that is partnership. ठीक है, पढ़ करके गए हो कि तो it is not that difficult a paper. Then next is Anandita and Ruxana agreed to share the financial outcomes of the businesses equally. Which feature of the firm is this? So it is sharing of profits and losses. ठीक. Next is examine one probable risk of starting the business based on verbal understanding, that is the lack of legal evidence. अगर दोनों के बीच में dispute होता है तो फिर नॉन रजिस्ट्रेशन के issues आ सकते हैं. If Anandita decides to leave the business in future, can Ruxana continue the business in the same form of organization? No. Partnership discontinue हो जाएगी. She can continue later as a sole trade business. ठीक. Then next is Speed Limited paid its daily wage workers 100 per hour. Ravi, a worker, was paid 800 per at the end of each day. He checked the number of hours he had worked and found the amount received to be correct. Recently, the company decided to focus on increasing productivity. Workers were now paid on the basis of the number of units they'll produce. So the now under the new system, Ravi's daily wage was rupees 1000 as he was fast in his work, but trade union was dissatisfied with his decision. So the question is कि which system of wage payment was initially followed? So it was time rate system. ठीक, कि the person is giving this much of time. Then briefly explain the merit of the old system that is being followed. So it is simple and it is more secured as compared to the other one because guaranteed amount is given regardless of fluctuation. हम थोड़ा धीमे भी काम करते, थोड़ा बीमार भी पड़ जाते, तभी मुझे पैसा उतना ही मिलेगा. Okay, after that is why was the trade union dissatisfied with the new system? ठीक, तो it is health, regarding the health and safety. अगर the person is not well और like hazardous conditions में the person is more into target based thing जिससे उसको ज़्यादा पैसा मिले, तो it is health and safety issue. Then loss of solidarity between the fast and the slow. Unity नहीं होती है because वहाँ पर discrepancy बहुत ज़्यादा हो जाती है कि एक पर्सन फास्ट काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एक स्लो काम कर रहा है तो उसको कम पैसा मिल रहा है, एंड दोनों के बीच में जो एक वो यूनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. देन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द वेज सिस्टम ऑन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स. तो ऑब्वियसली इट विल बी एज इनकम विल बी इनस्टेबल. रीज़न unstable economic security of workers. Why? Because if he is sick, so he will not be able to earn. Then there will be pressure on the slow workers, बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, any other such point is acceptable. Then suspension, you have to explain that temporary staff separation, and you have to tell one way in which exit interviews, जो एकदम टाटा बाय बाय के टाइम पर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कैसे बेनिफिशियल होते हैं. तो एम्प्लॉयर, देयर इज़ आइडेंटिटी ऑफ वीकनेस.
ठीक, मतलब एम्प्लॉयर इज अंडरस्टैंडिंग कि what are the issues on which the person employer should work on, so that further the employees should not leave, and there is no absenteeism and employee turnover, labor turnover. And employees के लिए whatever a kind of feedback is there, he has a formal platform to give or to present his grievances there. Okay, then next is you have to tell 4 hindrances that can come in the place of training, means that you have to mention the training hindrances. So it can be lack of top management support, then shortage of qualified trainers, resistance to change, and inadequate training facilities or funds. ठीक, any 4 can be mentioned. Then next is data is given, and according to that you have to mention the first one. Infogram Limited outsources the review of its human resources to a law firm. Name the trend that is being followed, that will be outsourcing, and in case you want to continue it further it will be KPO, because law firm जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लीगल सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड की जाती है, जनरल सर्विसेज हो इट विल बी BPO, बट बहुत ज़्यादा जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, देन इट विल बी KPO. And one advantage of allocating the core working period to 45% of its workforce, so it will be operational continuity and effective coordination is maintained. Then why was Infogram Limited allowed only 20% of its workforce to work from home? Because of the reason for control, the balance between flexibility and organizational control. Then permanent part-time employees can work simultaneously in another organization. Reason behind, because they are not bound to work full-time here. A full-time exclusivity contracts and work fewer hours here in the organization, hence they can move outside also. Then internet and intranet. Internet, the jobs and all that are mentioned there on the websites of the different companies. And intranet is within the organization जब job postings and all are done. ठीक, तो within the organization is intranet, and outside the organization on internet like e-recruitment form of, तो वो internet होता है. Then again the direct meanings of all these are asked. Then briefly you have to explain 2 objectives of self staff transfer and explain equity and preference shares. Then oral communication, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड फाइनल इंटरव्यू. मतलब ये डायरेक्ट चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक, इफ़ यू हैव स्टडीड दिस आप उसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हो. अब अच्छा, वील मूव टूवर्ड्स अ लेटर इन द लास्ट. देखो इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि द पिरामिड इज गिवन. ठीक, एंड द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि नेम द मिसिंग नीड दैट अपीयर्स एट द बेस ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स. तो इट विल बी फिजियोलॉजिकल नीड्स. सबसे पहले तो स्पेलिंग ही सही होनी चाहिए. ओके, फिजियोलॉजिकल PY से नहीं शुरू होता है, PS से नहीं शुरू होता है, साइकोलॉजिकल मत लिख देना. देन आइडेंटिफाई द नीड्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस. ह्यूमन बींग्स वांट टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विद अदर्स, तो इट विल बी नोन एज सोशल नीड्स. ह्यूमन बींग्स अटेम्प्ट टू रियलाइज देयर फुल potential, it will be self actualization. Then why is Maslow's need hierarchy represented by a pyramid? So it is mentioned that because it shows a hierarchical order, the first being the most important and last being the later one. Means only the सबसे पहली need fulfill होती है. Once that need is fulfilled, only then you will move towards the further. Hence वो जो इम्पॉर्टेंस है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक, एवरी डे यू वोंट बी मोटिवेटेड टू मीट योर फ्रेंड्स, बट एवरी डे यू आर मोटिवेटेड टू हैव फूड एंड टेक बाथ. देन नेक्स्ट इज what needs of employees are satisfied by the following incentives given by an organization. So gratuity is your safety and security needs. Then recognition at the annual meeting is your कौन सी वाली होती है, esteem needs.
Then you have to differentiate between morale and motivation. So it is an internal drive or process that stimulates individual to take achieve action. The morale is the general attitude of the person or the spirit towards their work environment. This is individual concept, this is a team concept. ठीक. After this is the part of letter writing that you are supposed to do, in which you have been asked. अच्छा, इसमें एक चीज़ दी हुई है कि आप the person has applied for the post of choreographer. Now final selection interview या फिर final approval वाला जो एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो इसमें आपको पूछा गया है. ठीक. ड्राफ्ट एन ईमेल फ्रॉम ट्विस्ट एंड टर्न डांस कंपनी अकेडमी टू मधुबन वर्मा इन्फॉर्मिंग अबाउट द फाइनल अप्रूवल ऑफ द मैनेजमेंट. तो फर्स्ट वील मूव टूवर्ड्स अ फॉर्मेट. 2026 के स्पेसिमेन में ये फॉर्मेट आया था. व्हेन यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, अदरवाइज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर जा रहा है तो उसका सेंटर हेड हमेशा यहाँ पर होगा. दैट आई हैव टोल्ड व्हेन आई हैव, मतलब जब हमने ये करवाया था तो हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर कभी कंपनी की तरफ से जाता है तो वो लेटर हेड पर जाता है. बट यू आर सेंडिंग एन ईमेल हियर. ठीक. तो ईमेल विल बी अकॉर्डिंग टू द ईमेल. ठीक. कि जिस अकॉर्डिंग उनका जो फॉर्मेट होता है. तो सबसे पहला विल बी द एप्लीकेशन. दिस विल बी the subject will be written as appointment letter for the post of choreographer. ठीक. फ्रॉम में आप कंपनी का कोई भी फेक ईमेल मेंशन कर सकते हो. टू में मधुबन वर्मा का कोई भी ईमेल मेंशन कर सकते हो. देन आफ्टर दैट इज डियर सर मैडम, जिसमें यू विल मेंशन इट एज डियर मधुबन वर्मा. ठीक. रेफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑलरेडी सब्जेक्ट यू हैव मेंशन. डेट यू कैन मेंशन हेयर, या फिर डेट आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हो बट ठीक है. और एस्टरिक्स यू हैव टू मेंशन व्हेन ईमेल में भी दिया हुआ है. देन इसमें रहेगा दैट फॉलोइंग योर फाइनल इंटरव्यू दैट वाज हेल्ड ऑन दिस एंड दिस डेट. Okay, we are pleased to inform you that you have been selected for the post of choreographer in this company. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. यू हैव टू मेंशन द जॉइनिंग डेट, यू हैव टू मेंशन द रिपोर्टिंग टाइम, द लोकेशन कि कहाँ पर आपको आना है, मेन स्टूडियो ऑफ दिस कंपनी. देन व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर सपोज टू ब्रिंग. ठीक. कि ये जब आना तब ये डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू ब्रिंग. देन वी लुक फॉरवर्ड टू having you in our team. Congratulations once again. And then last में यहाँ पर you will mention warm regards. You will mention your name and your signature and you are the management team of this company. Okay. So ये management team twist and dance company, twist and turn dance company. ठीक. तो ये आपका this was supposed to be your final appointment letter. So I hope you had a good paper and do share it with your friends and tell me what marks you are expecting in your exams. Now keep preparing for the next paper. Best wishes. Thank you.